90% of our volunteers, they join for the cause, but they stay for the community. Because they feel that this is a community जहाँ पे हम बातचीत कर सकते हैं. That's their way of retention. Because एक टाइम के बाद ना the emotion towards the issue वो dissipate हो जाएगा. There will be some other power which is going to make you stay. For us that power is the community. उनको वो दोस्त यहाँ मिलते हैं जो उनको जनरल इस कम्युनिटी के बाहर नहीं मिल पा रहे, जिनसे वो खुलेआम कुछ भी बात कर सकते. I'm an introvert person. So these people of बचपन, these people are great. यहाँ पे किसी को भी अकेला फील नहीं होता है. Whenever you are in group, you just feel belonged. So belongingness, and you know that space, safe space where you can share anything of the incidents and events that we have encountered as a child, जो हमने किसी के साथ share नहीं किया है. When I was a child, I faced this unsafe touch kind of thing, and I never shared it with anyone क्योंकि मुझे ऐसा लगता था this is my mistake and I am the one who is guilty. So this is the place where I shared this incident for the very first time. So the space for the communication, the belongingness, this is something which keeps me growing and connected with Bachpan. Most of the volunteers come for certificates, but they stay for the culture. And I think it's a very supportive community. Like anytime if you need anything, suppose if you're shifting to Pune, we have a proper Bachpan safe place group. You can ask them, oh, I need help. And they will go above and beyond to help you out. And there's a particular feeling that stays with you if you're in Bachpan. I think not everything in this world should be about money. I think we are not that. I think we are all kind of tired of capitalism. So we need people who look out for each other. We need community. We need people. We need people around to help us. We need more people who are like in love with other people. So we need more love rather than the money. ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਆ. ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਇੱਕ NGO ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ. ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਈਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-to-1 ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਹੰਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ कभी भी एवे रिजेक्शन नहीं फेस की इतनी ज़्यादा लेवल दी. बचपन ज्वाइन करने से पहले आई डिड नॉट रियली हैव अ कम्युनिटी टू टॉक टू. व्हेन आई ज्वाइन बचपन तो यहाँ पे मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा. नोबडी फोर्स्ड मी टू टॉक टू देम. अगर मैं नहीं करना चाह रही थी तो धीरे धीरे आई गॉट वेरी कंफर्टेबल. आई बिल्ड अ कम्युनिटी. आई गॉट सम फ्रेंड्स जो मुझे समझते हैं एंड एक्चुअली उसी की वजह से इट्स द रीज़न कि मैं अभी आपसे बात कर पा रही हूँ यहाँ पे बैठ के.